फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने इसराइल को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि इसराइल की सलामती किसी हमसाया इलाके पर कब्जा करके यकीनी नहीं बनाई जा सकती। मगरबी किनारे, गाजा और लेबनान के हवाले से बेंजामिन नेतन्याहू की पॉलिसीज तवील मुद्दत में इसराइल के मफाद के खिलाफ हैं। ये पॉलिसीज खित्ते के तमाम लोगों में नाराजगी और तशद्दुद को मजीद बढ़ाती हैं। Je pense qu'aujourd'hui, le Premier ministre Netanyahou n'a pas une politique. Il a eu des vrais résultats sécuritaires, il a défendu son pays face à des menaces qui existaient. J'ai été en désaccord avec lui sur ce qu'il a fait à Gaza, et c'est très tôt parce que je considère qu'il n'a pas simplement lutté contre un groupe terroriste, et là c'était légitime après l'attaque du 7 octobre 2023, mais qu'il a touché des populations civiles de manière injustifiée. Mais la politique qui continue d'être menée à Gaza, la politique qui est menée en Cisjordanie avec des colonisations nouvelles et des actes qui sont absolument inadmissibles, et la politique qui est menée au sud Liban, elle est dans la durée contraire aux intérêts d'Israël. Parce qu'elle alimente le ressentiment, la violence de toutes les populations de la région. Et donc aujourd'hui,